Suvendu Das is a senior security product engineer in IND Money. He has a wealth of experience in cybersecurity and has helped over 30 companies worldwide to identify and fix security issues. Some of those notable organizations he has contributed to includes Apple, Microsoft, and OpenAI. Suvendu also holds several important certifications such as CHNA, CH Master, and EGPT. His extensive knowledge and experience make him invaluable resource in the field of cybersecurity. We are looking forward to hear his insight and learning from his expertise today. So, Suvendu Das, you can take it over. Hi everyone, how are you doing? Okay. Is my screen visible? Yes. Yes, it is visible. Okay. Welcome everyone. Thank you for joining me today. Let me introduce myself. My name is Suvendu Das, and I'm currently working as a senior product security engineer at IND Money. In this role, I manage and build comprehensive security protocols to protect our digital assets and ensure the safety of our users. My responsibilities include conducting comprehensive penetration testing to identify and mitigate vulnerabilities, overseeing compliance with industry standards and regulations, and implementing robust security measures across all platforms. Additionally, I manage DevSecOps practices, perform threat modeling to anticipate and counter potential security threats, swiftly address any security breaches. My work extends to securing mobile and cloud environments as well, ensuring a holistic approach to our cybersecurity strategy. With a focus on maintaining the highest level of security, I work to safeguard the integrity and confidentiality of our systems. I have assisted over 30 global companies, including big companies such as Apple, Microsoft, and OpenAI, by identifying and resolving critical bugs. I discovered two significant vulnerabilities in ChatGPT. When OpenAI launched their program, I found an IDER and related issue in the ChatGPT. I was initially among the top 5 hackers out of the 2,000 researchers who participated in the OpenAI program in Bakraw. To learn more about my work and expertise, you can visit my website at suvendudas.com. Currently, I am a bug bounty hunter, doing very rarely, and most of my recon processes are fully automated. Today, I'm excited to talk to you about the advanced reconnaissance techniques with scope-based targets. This talk will provide you an in-depth understanding of different reconnaissance methodologies applied to varying scope of targets, ranging from small scope to large scope. I will try to explain the maximum things in this 1 hour. Then what is reconnaissance? It's also called as recon, as you know. This is a crucial phase in any penetration testing or security assessment, even in our bug bounty hunting. It involves the gathering as much as information as possible about the target. The more information you gather, the better you can understand potential attack vectors. We'll cover tools, techniques, and methodologies used for small, medium, and large scope targets. After covering the theoretical aspects, I will have a dedicated practical session to demonstrate some of the techniques. We can start now. Scope-based targets. There are 3 scope-based targets are there. One is small scope, another is medium scope, and one is large scope. This small scope, we have assigned one target, like target.com, beta.target.com, or qa.target.com, payments.target.com. Even in our bug bounty hunting or even our pen testing engagement, we have given a small scope. This is a small scope target, like we have to hunt in our bug bounty or in our pen testing engagement. In the second step, second scope means all subdomains of that target is covered here, like payments.target.com, like beta.buckcloud.com, api.buckcloud.com, everything belongs to the target. All things covered in the medium scope. In the third step, we have the large scope. In the large scope, we have the acquisitions, subsidiaries, like IP, CIDI range,
everything belongs to the target. Means if Google acquire a company, you can find in that company and report to the Google. Similarly, Microsoft, Apple, you can do all the things. Small scope. When dealing with small scope targets, such as a single domain, the focus is on gathering comprehensive information about the specific domain. When we get a small scope target, the first step is we should do whois lookup. In whois lookup, it provides the registration details of the domain, including the registrant's contact information, registrant's expiry dates, and the registrar's name. This information is useful for understanding the ownership and history of the domain. For example, discovering the registrars and historical changes can help you to trace the ownership changes, uncover connected domains as well. अगर आपको मिल रहा है कोई भी टारगेट, पहले आप हुइस लुकअप कीजिए. अगर वो डोमेन एक्सपायरी होने वाला है, देन यू कैन ट्रैक दैट डोमेन. अगर कंपनी ने डोमेन रिन्यू नहीं किया, then you can directly claim that domain, and this will be a complete domain takeover. Lots of reporters are also claiming these types of issue. In the second step, we have the DNS records lookup. DNS records gives us a detailed view of the domain's DNS infrastructure, including A record, AA, AAA record, MX records, NX records, text records. There are tools like DNS Recon and DNS Enum helps us to automate this process, identifying the mail MX record, SPF, DMARC. You can directly report as a email spoofing vulnerabilities. If you want to automate this process, you can directly use the DNS Recon or DNS Enum directly in your Recon automation script. I have also created a script in my GitHub repo that is using Sodan. Sodan API key you can include in your automation process as well. The third step is called technology fingerprinting. Technology fingerprinting involves identifying the technologies used by the target website. This includes web server details, CMS platforms, JavaScript libraries, and other technologies as well. If you want to automate this process, Whatweb is also an excellent tool for this purpose. Knowing the technologies in use can guide you towards specific vulnerabilities or configuration issues. आप लोग डायरेक्टली वापालाइजर एक्सटेंशन भी ब्राउजर में यूज कर सकते हैं. जब आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करेंगे, it will detect all the technologies that used in that website. You can also use build with directly. You can use that. The fourth step is called CVEs. Finding common vulnerabilities exposure like CVEs in the technologies used by the target can highlight potential security issues. You can use tools like Retardj, Sneak. This can automate this process. These tools cross-reference the discovered technologies with known vulnerabilities, providing insights into potential exploits. आप लोग डायरेक्टली जो Retardj प्लगइन है क्रोम या फायरफॉक्स में डायरेक्टली सब इसको यूज करेंगे, एंड जब आप उसको विजिट करेंगे वेबसाइट को, दिस विल डिटेक्ट द आउटडेटेड लाइब्रेरीज और सीवीज. उसके साथ अगर आपको कोई भी सीवीज मिल गया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्नीक को आप यूज़ कर सकते हैं. दिस विल डिटेक्ट एन एक्सप्लॉइट phase for you. So you can directly exploit the vulnerabilities and directly report to that organization. In the fifth step is called directory enumeration. Directory enumeration helps us identify hidden directories of files on the target server. There are tools like FOB, Dartsearch, GoBuster. These are efficient for this task. Discovering the administrative panels, configuring files, or backup files can be crucial for further exploitation. An important thing, whenever you are doing fudging, never ever forget to recursive fudging. It will check every pass in the recursive fudging. अगर आपको एक directory मिल रहा है, जब आप recursive fudging use करेंगे, this will check every pass of that target. You can use FOB. This is a very fast tool. I am also using this. The sixth step is called port scanning. Port scanning reveals open ports and the services running on them. Nmap is a powerful tool. Nabu is also a powerful tool for comprehensive port scans.
Identifying open ports helps in mapping the network and understanding the services exposed to the internet. जब भी आपको nvf स्कैन करना है, ऑलवेज यूज -sb. दिस विल ऑल्सो डिटेक्ट सर्वर वर्सन डिटेक्शन. अगर इन एनी पोर्ट्स 65,535 इन एनी पोर्ट्स एनी vulnerable services are running, this will identify. if you अगर आपको मिल गया कोई भी vulnerable services, then you can try to exploit using Metasploit and directly report to that issue. In the seventh step, we have the broken link hijacking. Broken link hijacking involves finding the broken links on the target site, taking over the domains or social handles also to which they actually point. Tools like BLC, this is broken link checker, and social hunter can assist in this also. These techniques can sometimes be used to solve malicious content or phish the users. अगर आपको कोई भी वेबसाइट मिला, उसमें कोई भी अगर फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कोई भी सोशल हैंडल्स है, तो आप विजिट कीजिए उसको, और उसमें यूजर नेम नॉट फाउंड 404 कुछ भी आ रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली क्लेम दैट यूजर नेम. ऑल्सो जब भी आपको कोई ईमेल्स मिल रहा है कंपनी से, वहाँ पे भी सोशल हैंडल्स रहता है, उसको भी आप चेक करना मत भूलिए इस स्टेप पे, ब्रोकन लिंक हाइजैकिंग में, क्योंकि कुछ ईमेल्स में भी वो अगर मिस हो जाता है कंपनी की तरफ से, then you can directly claim that username and directly report. In the eighth step, we have called the Wayback History. Wayback History allows us to view archived version of the target website. This can reveal information that was once public but later removed. Tools like Wayback URL, Waymore are used for this. This historical data can provide insights into old endpoints, configurations, or even data leaks. There are lots of tools are there like Wayback URL, Waymore, Gao Plus. You can use multiple tools and combine all the results and sort them after that. Then in the ninth step, we have called the JS files. JavaScript files contain sensitive information such as API keys, secrets, and the endpoints. There are tools like JFScan, Secret Finder, Link Finder, also Retire.js. These tools can help us to analyzing the JS files for such data. Extracting these data can help identify the backend services, hidden functionalities, or even sensitive data exposure. जो भी आपको सारे URLs मिला, आप Wayback URL से, you will grab the .js. After that, run these tools in the .js URLs. Then you will definitely get some sensitive results like API keys, secret, anything this the JS file can discover. In the 10th step, we have the parameter discovery phase. Parameter discovery is the process of finding the HTTP parameters that could be manipulated for attacks. There are tools like ParamSpider or Zune, Paraminer are effective for this. Identifying these parameters can be the key to discover vulnerabilities like SQL injection, cross-site scripting. जब भी आप ParamSpider को यूज करते हैं, हमेशा यूज कीजिए QS replace. This will automate your cross-site scripting XSS vulnerabilities. You can find as much as parameters possible. अगर आप burp suite यूज कर रहे हैं, then you can use paraminer. या आपको एक सारे URLs को भी आपको parameters को identify करके दे देगा. In the 11th step, we have the called Google Darking. In Google Darking, uses the advanced Google search techniques to find information exposed through the search engines. This can uncover the sensitive information, expose directories, documents, misconfigured services, even the SQL errors, PHP errors, all things this will find out. गूगल डर्किंग के लिए एक टूल है पेंटेस्ट टूल्स, क्या गूगल हैकिंग. वहाँ पे जाके आप टारगेट का नेम दीजिए और एक एक करके सारे डॉक्स को यूज करके आप सेंसिटिव डाटा फाइंड करने के लिए ट्राई कीजिए. In the 12th step, we have called the GitHub search process. Searching GitHub repositories for sensitive information such as API keys, credentials, and configuration files. These tools can help find accidentally committed secrets for sensitive files. Like if you're using Trufflehug, GitGrabber, GitDurker in your GitHub Recon automation phase, then you can use. अगर आपको मैनुअली चेक करना है, this will be a great idea.
तो आप गिटहब डॉक से, गिटहब में एक रेपो है, वहाँ पे आपको सारे गिटहब डॉक्स मिल जाएगा। वो आप यूज करके एक कंपनी के साइट पे जाइए, देन यू विल मैनुअली एक एक करके सारा चेक कीजिए। देन अगर कोई भी सीक्रेट्स, एपीआई के पासवर्ड अगर लीक हो रहा है, देन आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। और नेवर एवर ट्राई टू एस्केलेट दिस इशू। अगर आपको कोई एडमिन पैनल भी मिल रहा है और वो कोई सीक्रेट्स, एपीआई कीज या कोई पासवर्ड अगर मिल रहा है, ट्राई टू एक्सेस देम, then this will increase your critical level. In the 13th step, we have called the misconfigured cloud storage. Identifying misconfigured cloud storage services that expose sensitive data. These tools can help for public S3 buckets, Azure blobs, and more. There are some buckets are like उसमें अगर read access enabled है और उसमें कोई भी sensitive data अगर visible है, then you can directly report. और हमेशा वहां पे मत रुकिए, अगर कोई भी अगर बकेट मिल रहा है, try to put some data in that bucket and try to delete that data from that bucket. अगर वो आप पुट और डिलीट अगर आप कर पा रहे हैं उस बकेट में, तो वो आपको एक इंक्रीज कर लेगा आपका जो सिवियरिटी। तो आप डायरेक्टली वो जब रिपोर्ट करेंगे, आपका ये सिवियरिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको बाउंटीज भी, अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं या आप बग बाउंटी कर रहे हैं, तो आपका वो रिवॉर्ड आपको ये इसमें बढ़ जाएगा। In the 14th step, we have the template-based scanning. We will use the nuclei. Nuclei uses the predefined templates to scan for the known vulnerabilities and even for the misconfigurations. It can quickly scan a target for a wide range of issues based on the community-based contributor templates. बट कभी भी community based templates पे डिपेंडेंट मत हुए, क्योंकि जो लोग सारे यूज कर रहे हैं, अगर आप भी वही यूज करेंगे तो आपको डुप्लीकेट्स मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा ट्राई टू क्रिएट योर वन एम एल टेम्पलेट एंड वन न्यूक्लियर टेम्पलेट एंड पुट इन योर रिकॉन पेज। ऑल्सो देर आर सम गिटहब रिपोजिटरीज, दे आर प्रोवाइडिंग प्राइवेट टेम्पलेट्स। उस प्राइवेट टेम्पलेट्स को भी आप अपना जब न्यूक्लियस कैन रन करते हैं, एक प्राइवेट फोल्डर बना लीजिए प्राइवेट टेम्पलेट्स। उस फोल्डर को भी न्यूक्लियर को बोल दीजिए, उसे भी वो स्कैन करेगा। तो आप कम्युनिटी बेस्ड टेम्पलेट यूज कर रहे हैं विथ अपना प्राइवेट टेम्पलेट्स, और कम्युनिटी का अगर कोई भी बंदा अगर वो प्राइवेट टेम्पलेट्स भी दिया है उसको भी आप यूज कीजिए, बट नेवर एवर डिपेंड ऑन द ओनली द डिफॉल्ट टेम्पलेट्स। इन द 15th step, we have the internet search engine discovery. For this, Sodan is an internet search engine discovering devices and systems connected to the internet. It reveals sensitive and vulnerabilities. It can be used to find exposed services, industrial control systems, और इवन अनसीक्रेट वेबकैम्स। जब भी आप इंटरनेट सर्च डिस्कवरी फेज में आते हैं, आप सोडान CLI कमांड यूज करके अब वो डायरेक्टली आप ओरिजिन आईपी को फाइंड करने के लिए ट्राई कीजिए। एक और टूल है अनकवर, ये प्रोजेक्ट डिस्कवरी का है। ये मल्टीपल एपीआईज की यूज करता है, लाइक सोडान, सेंसिस और फोफा, गूगल एपीआईज की लॉट्स ऑफ। इसको अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो आप ये डिपेंडेंट सारा origin IPs आपको एक क्लिक में वो आपको दे देगा। तो दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। इन द 16th step, we have the potential pattern extraction. Here जो भी कोई हमें सारा वेबैक यूआरएल से मिला यूआरएल्स, यहाँ पे हमें GF को यूज करना है। द GF टूल इज डेवलप्ड बाय द टर्म is a wrapper around graph designed to simplify the process of searching common pattern in large code base and data. It effectively identifies vulnerabilities such as cross-site scripting, SQL injection, server-side request forgery, even RC parameters it will find out, or and even business logic flaws. By using predefined and customizable JSON-based patterns, GF scans URLs, forms, and other user inputs to detect potential URLs. जो भी कोई आपको वेब यूआरएल से यूआरएल सारा मिला, यहाँ पे आप जीएफ यूज करके पॉसिबल जो जिस पे आपको मैनुअली चेक करना है या ऑटोमेशन टूल्स भी रन करना है, वो आप एक सेपरेट उसको बना लीजिए, लाइक एक्सेस पॉसिबल पैरामीटर्स, क्रॉस साइट, देन एसक्यूएल पॉसिबल पैरामीटर्स, आरसीई, बिजनेस लॉजिक पैरामीटर्स। These tools will find out the possible parameters where there you can manually check, and also you can use your automation tools. In the 17th step, we have the general security misconfiguration.
Here we will use various tools and techniques for scanning general security misconfiguration, such as course issues, security headers, email security like SPF DMARC, common web vulnerabilities like XSS, SQL, CRLF, CSRF. यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी सारे यूआरएल्स आपको मिला या जो वो डोमेन्स मिला, वहाँ पे आपको कॉर्स स्कैन के लिए आपको कॉर्सी टूल यूज कर सकते हैं आप अपने ऑटोमेशन फेज में। सिक्योरिटी हेडर्स के लिए आप securityheaders.com पे जाके वो सिक्योरिटी हेडर्स का सारा वो चेक कर सकते हैं। और सीआरएलएफ के लिए सीआरएलएफ फॉज, एक्सेस के लिए एक्सेस स्ट्राइक, और डाल फॉक्स, और एसक्यूएलआई के लिए एसक्यूएल में आप डिफरेंट टूल्स डिफरेंट vulnerabilities के लिए आप यहाँ पे अपना ऑटोमेशन पे वो सारे टूल्स को ऐड कर लीजिए विथ ऑल द यूआरएल्स। सो ये आपको आप अपना VPS में ये रन कर लीजिए और इसको छोड़ ही दीजिए। ये आपको एक रिकॉन आपको एक फुल्ली ऑटोमेशन पे बन जाएगा। Then we have the medium scope. When dealing with the medium scope targets, we include subdomains of the target. This expands our reconnaissance scope and provides more potential entry points. The first step is called subdomain enumeration. Subdomain enumeration identifies all the subdomains associated with that target. For that, you can use subfinder, asset finder, sublister for the passive enumeration, or for the active enumeration of FOF you can use. Discovering the subdomains can reveal staging environments, development sites, and other areas that might be less secure. जब भी आप सबडोमेन एनुमरेशन करते हैं और पैसिव एनुमरेशन करते हैं और सब फाइंडर टूल को जब आप यूज करते हैं, ऑलवेज यूज हाइपेन ऑल। हाइपेन ऑल क्या करता है, जब आप सब फाइंडर को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारे एपीआई की को लाइक सोर्डन, सेंसिस, फोफा, और वो सारे एपीआई की को आपको सब फाइंडर की कॉन्फ़िग फाइल में ऐड कर देना है। जब आप ऑल पैरामीटर के साथ सब फाइंडर को रन करेंगे तो ये आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा जब आप सब फाइंडर को नॉर्मल मोड में रन करेंगे। हाइपेन ऑल ये थोड़ा टाइम लेगा बट इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा आउटपुट, एक्स्ट्रा सब डोमेन्स। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, हाइपेन ऑल के साथ सब फाइंडर को आपको रन करना ही है when you are doing the passive subdomain enumeration. And when you are doing the active enumeration, you have to use the huge word list, DNS word list. एंड वहाँ पे आपको फॉफ आपको यूज करना है, लाइक इट विल चेक beta.target.com, payment.target.com, services.target.com. दिस विल ब्रूट फोर्स ऑल द एक्टिव सबडोमेन्स। अगर कोई भी अगर सबडोमेन्स मिस हुआ है हमारा पैसिव सबडोमेन एनुमरेशन में, तो एक्टिव सबडोमेन में एनुमरेशन में ये पॉसिबल होगा कि ये इसको आइडेंटिफाई कर ले। बट हमेशा ऑलवेज यूज मोर टूल्स फॉर पैसिव सबडोमेन एनुमरेशन। जितना ज़्यादा टूल्स हो सके उसको यूज कीजिए। And in the second phase, we have the sorting and filtering. Sort and filter all the subdomains collected from the different tools, combining them into a single list and removing all the duplicates. This will prioritize the subdomains based on the relevance and sensitivity to focus on the most promising targets, ensuring the efficient and the effective our security assessment और bug bounty hunting. जो भी सारे आपको अपने एक्टिव एंड पैसिव एनिमेशन यूज करके जो भी सारे टूल्स रन करके जितने भी आपको सबडोमेन्स मिला उसको कंबाइन करके फिल्टर कर लीजिए, तो वो आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। इन द थर्ड स्टेप we have the probing. We have to use the HTTPX to probe the all subdomains. It will identify the status codes, response lengths, and live subdomains. This process helps filter out the irrelevant or less interesting subdomains. It also identifies which subdomains support HTTP, HTTPS for further refining the list to focus on significant and potentially vulnerable targets. जब भी आप HTTPX रन करते हैं वो एक स्टाटस कोड लेंथ भी आपको बता देगा। स्टाटस कोड लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका पॉसिबल ये है कि उस सब डोमेन में फीचर्स ज़्यादा है। तो अगर फीचर्स ज़्यादा होगा तो अगर लॉगिन पैनल मिल गया, कोई अगर साइन अप साइन साइन कोई कुछ भी मिल गया, सर्विसेज अगर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ आप अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, ईमेल सिक्योरिटी बाईपास भी कर सकते हैं, तो उस डोमेन को आप टारगेट कर सकते हैं वहाँ पे।
The fourth step, we have the filtered sensitive subdomains, identifying the sensitive subdomains such as the Jenkins, QA, production, UAT, payment, API, और भी बहुत सारे एक वार्ड लिस्ट है जो भी सारे documents आपको मिला वो सभी से आपको ग्रेप कर लेना फॉर योर बेटर एनहांसमेंट, लाइक आप इसको बेटरली और अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जेनकिंस एक्सेस मिल गया तो डायरेक्टली प्रोडक्शन में घुस सकते हैं, तो वो आपको क्रिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो हमेशा इन सब डोमेन्स को एक सेंसिटिव के बेस पे आपको उसको फिल्टर कर लीजिए। देन इन द फिफ्थ स्टेप वी हैव द सबडोमेन टेकओवर, checking for subdomain takeover vulnerabilities using Subji that I use personally. Subdomain takeovers can occur when a subdomain points to an external services that is no longer in use. I mean अगर कोई भी subdomain पे no such bucket आपको एक फिंगरप्रिंट मिल गया, that means वहाँ पे आपको सबडोमेन टेक ओवर एडब्ल्यूएस का आपको हो सकता है। आप एडब्ल्यूएस में जाके वो आप डायरेक्टली उस सबडोमेन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको टेक ओवर कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया था, मैंने अपने बीपीएस में सारे सबडोमेन्स को डाल दिया था रात को, सुबह जब मैंने पॉसिबल सबडोमेन टेक ओवर, तो मैंने ये अपना सोते वक्त एक सबडोमेन टेक ओवर मैंने वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लिया था। कैन आई टेक ओवर एक्स वाई जी एक वेबसाइट गिटहब रेपो है, वहाँ पे आपको सारा आपको फिंगरप्रिंट्स मिल जाएगा सबडोमेन टेक ओवर के लिए। तो आप जब सब्जी रन करेंगे वो आपको सारा अगर vulnerable है हाय तो सुवेंदु। आपको आइडेंटिफाई कर देगा। हेलो बट यहाँ पे भी हेलो आपको सुवेंदु। है हेलो सुवेंदु, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। वॉइस जो नहीं क्या ब्रेक हो रही है आपकी? क्या बस ब्रेक हो रहे हैं? वो- हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। अभी फाइन है? यस। ओके, नाउ सर, फाइन। की आवाज़ सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत नहीं आई। ओके फाइन फाइन, कैन आई स्टार्ट नाउ? यस प्लीज। या ओके थैंक्स। ओके, सबडोमेन टेक ओवर के लिए आप कैन आई टेक ओवर एक्स वाई जी पे जाइए। जब भी आपको कोई भी फिंगरप्रिंट्स अगर मिल रहा है सब्जी की टूल से, वहाँ पे आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हैं। वो पॉसिबल हो भी सकता है या भी नहीं, बट फिर भी अगर आपको आप उस टूल्स पे भी आप डिपेंडेंट मत रहिए, मैनुअली खुद भी आपको चेक कर सकते हैं। आप ट्राई टू कीजिए, अगर कोई भी पेड सर्विसेज है सबडोमेन टेक ओवर के लिए वो आप परचेज कर लीजिए, अगर वो पॉसिबल हो सकते सका तो देन आप डायरेक्टली टेक ओवर करके कंपनी को रिपोर्ट कर लीजिए आज ए बग बाउंड्री प्रोग्राम। Then in this sixth step, we have the web screenshots, taking screenshots of the discovered subdomains for visual inspection. This provides a quick overview of the exposed services and their interface. जब आप वेब स्क्रीनशॉट रन करते हैं सारे सबडोमेन्स पे, आपको यहाँ पे एक विजुअल इंस्पेक्शन मिल जाता है आपको सारे सबडोमेन्स को देखने के लिए। अगर कोई भी एडमिन पैनल हो, कोई भी फीचर्स हो, कोई भी अगर सेंसिटिव डाटा भी इवन एक्सपोजर हो रहा है, डायरेक्टली यू कैन चेक दैट फ्रॉम द इमेज फाइल्स। तो वहाँ पे आप अपना फोकस भी कर सकते हैं मैनुअली उसको हैंड करने के लिए। In the seventh step, we have the word list generator, generating custom word list based on the discovered information for further fuzzing. This word list can be to the specific technologies and naming conventions used by the target. And also, this word list can help you to brute force the login panel as well. इसके लिए आपको क्यूल CWL क्यूल टूल यूज करना है। क्यूल टूल यूज करके सारे सब डोमेन से आपको एक वर्ड लिस्ट बना देना है, एक one word list। और you can use that one list to brute force the admin panels। अगर आपको कोई login panels भी मिल गया, आप डायरेक्टली उस word list को यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको फजिंग भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी वो word list आप यूज कर लीजिए डेफिनेटली। इन द एट स्टेप, डायरेक्टरी एन्यूमरेशन। डायरेक्टरी एन्यूमरेशन के लिए हमेशा आपको, अगर आपने टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर लिया, टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर ये IIS सर्वर है, PHP है, गोलैंग है या जावा है, उसके हिसाब से यू हैव टू यूज दैट ह्यूज वर्ड लिस्ट। डोंट यूज रैंडम वर्ड लिस्ट, use word list according to the services or the technologies, then you will definitely get a good output।
इफ यू आर यूजिंग, आपको यहाँ पे सारे सब डोमेन्स पे फॉफ यूज करना है in your automation script. Again, in the 9 step port scan, we have already said nmap and nabu you can use for you have to scan all the subdomains, uh, all the 65,535 ports using using the SB service person detection to find out. Again, in the 10 step wayback history जब भी आपको सारे URLs मिलता है वहाँ पे आपको .js फाइल ग्रेप करना है, लाइव यूआरएल सभी से भी आपको ये एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको एक्सटेंशंस भी ग्रेप करना है, लाइक ASP PHP .txt, क्योंकि .ba के कोई भी एक्सटेंशन हो, सेंसिटिव एक्सटेंशन, वहाँ पे सेंसिटिव डाटा भी एक्सपोज हो रहा है। .txt में अगर किसी ने कोई पासवर्ड, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड छोड़ दिया, अगर आप उसको ग्रेप कर लेंगे, then you can directly manually check all the extensions based URLs. So it will definitely help you to give some juicy information. Again, in the 11th step, we have to use nuclei with the default templates, with our private templates in all the subdomains. Again, in 12th step, this is an important step, Sodan. When you are using Sodan, you have to first extract the IPs. जब आपको आईपीएस मिल गया, उसी आईपीएस पे आपको फॉफ रन करना है विथ ए गुड वर्ड लिस्ट, और उस आईपी के अगेंस्ट के आपको न्यूक्लियर भी रन कर देना है विथ योर डिफॉल्ट टेम्पलेट्स, विथ द प्राइवेट टेम्पलेट्स। जब भी ये आपको सोडन पे जब भी कोई ओरिजिन आईपी या कोई भी सर्विसेज अगर आईपीएस मिल रहा है, फर्स्ट स्टेप इज फॉफ रन करना है, देन न्यूक्लियर रन करना है। ये 2 स्टेप आपको ये याद करना है, क्योंकि यहीं पे 12 स्टेप में बहुत सारे लोग जब भी अपना कोई बाउंटी स्क्रीनशॉट देते हैं, वहाँ पे यही मेजर वो एसेट वो जो डिस्कवर लोग नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे वो ये जो हिडन एसेट वो फाइंड कर लेते हैं सोडन स्कैन से। In again 13th step, general vulnerability scanning, you have to use all the default tools like CRL Forge, Access Strike, Dalfox against all these URLs and with all the subdomains in your automation script. Then here is large scope. For large scope targets, we extend our reconnaissance to include acquisitions, subsidiaries, and any related entities connected to the main target. So in the first step, we have the call tracking and tracing. Tracking and tracing all related domains and entities. This helps in identifying additional targets that part of the same organization or ecosystem. यहाँ पे एक TLD brute एक tool है. Here you can use that tool for the tracking and tracing purpose. In the second step, we have the call subsidiary and acquisition enumeration. Enumerating the subsidiaries and acquisitions to identify additional targets. This step broadens the scope to include all entities that might share the same security posture or infrastructure. फिर आपको अगर गूगल ने किसी को एक्वायर कर लिया, कोई भी, वो आप डायरेक्टली गूगल विकीपीडिया पे आप जाइए, सर्च कीजिए गूगल एक्विजिशंस विकीपीडिया या क्रॉन्सबेस पे जाइए, डायरेक्टली वो आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको विकीपीडिया में मिल ही जाएगा। उसके लिए एक टूल भी है, अहमद हलावी ने ये रिलीज किया था, एक्विजिशंस। यू कैन ऑल्सो यूज दैट टूल ऑल्सो टू फाइंड द एक्विजिशंस, बट आई विल से डोंट डिपेंड ऑन दिस टूल ओनली, use your manual search to find the subsidiary and acquisitions. In the third step called reverse lookup and ASN lookup, you have to performing the reverse lookup and ASN lookups to discover the additional related infrastructure. This helps in mapping the network and understanding the full extent of the targets online. Here you can check the CID range, also IP range, everything you can check. Like you can use the tool view dns.info reverse IP. यहाँ पे आपको reverse IPs भी सारा मिल जाएगा। और SSL स्क्रैप एक टूल है गिटहब से, ये भी आपको यूज करके आप SSL HTTPS के जो भी सारे डोमेन से कुछ मिल रहा है, यहाँ से भी आप और भी थोड़ा ज्यादा आप डिस्कवर कर सकेंगे। And here the automation tools, to streamline and automate the reconnaissance process, we can use various automation tools. Beam is a good tool discovered created by Harsh Bothra. This is based on the scope based methodologies. You can use that, but I think this is now archive mode by Harsh Bothra.
In the second step, you can use another tool is there, Recon FTW. Osmedius is also there. Sniper is there. Recon FTW automates the entire reconnaissance process from start to finish. It is highly customizable and can be specific reconnaissance needs. Osmedius also a powerful tool for reconnaissance and vulnerability scanning as well. It integrates many of the tools we have discussed into a single framework. Sniper also you can use for the automated scanner for reconnaissance and vulnerability assessment. It provides a detailed reports and integrates with other tools for comprehensive scanning as well. Now I will share you some demonstration, live demonstration. Let me know. Is my terminal visible? Yes, is my terminal visible now? Yes, yes. Yes. No one? Okay, thanks. For small scope, I have created a small script, like I will say, there you. दिस इज स्मॉल बेसिक स्क्रिप्ट बिकॉज अगर मैं पूरा स्क्रिप्ट रन करूंगा सारे टूल के साथ ये 2-3 दिन भी लगेगा टारगेट के अगेंस्ट पे। मैं एक बेसिक दिखा देता हूँ। इन दिस स्क्रिप्ट में क्या क्या हूँ ऑटोमेट करने के लिए हु इज लुकअप। दिस इज डूइंग द हु इज लुकअप इन द फर्स्ट फेज using command who is and it will save any output who is .txt. In the second step, to automate the technology enumeration, I am using whatwave. It will also give me a text output whatwave.txt. In the third step, I'm using FOB with a default wireless time. For that, I'm using. In the fourth step, I'm using nmap for the port scanning. And the fifth step, I'm using webback history for the webback archive URLs. In the sixth step, I'm using replace scan. This is a small script. This is a just for a reference. You can customize your whole recon process in a single framework. You can create a one-liner and give this all commands in a one bash script, like I'm sharing. If anyone can share me a target, this target should have a bug bounty program. Click time. Just a minute. Small scope dot ssg small click time.com. बट बिफोर दैट एक मुझे करना है। अगर मैं ये VPS यूज करता हूँ, अगर मैं VPS यूज करता हूँ, अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ तो ये सेशन भी कैंसिल हो जाएगा। फॉर दैट आई विल यूज ए कमांड screen -s click time। ये मैंने क्या किया, ये एक सेशन क्रिएट कर लिया। अगर मैं इस सेशन को टर्मिनेट भी कर लूंगा, अगर मैं सो भी जाऊँ, अगर लैपटॉप बंद भी कर दूं, तो ये स्क्रिप्ट अपना VPS में रन होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड योर हैक व्हाइल स्लीपिंग। आप अपना VPS में अपना रिकॉन स्क्रिप्ट डाल दीजिए और सो जाइए, और ये अपना सारे आपको आउटपुट आपको ये VPS में करता रहेगा और आपको ये आउटपुट देता रहेगा। clicktime.com। First, this is doing a who is lookup. Then whatwave for the technology enumeration. This will take a time. In the meantime, I will share you something. Is my visible? My browser is visible? Yes, could you confirm? Yes, Yes. yes. Okay, thanks. For here I am doing a Google Darking. Like I need to report to NCIIPC, and I want to be a top 15 researcher in the NCIIPC in the government for the government. Then what we will do? I will do gov.in, and I will search for publicly exposed documents. This will give many results, but you have to find any sensitive documents here. Like for the configurations file exposed, अगर yes, और कुछ सेंसिटिव अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी एक्सपोज हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट में किसी भी वेबसाइट्स पे, तो आप डायरेक्टली यू कैन रिपोर्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज SQL एरर्स।
अगर आपको गूगल में कुछ भी एसक्यूएल एरर्स मिल जाएगा तो दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। अगर कुछ भी एसक्यूएल एरर अगर मिल रहा है तो आप डायरेक्टली उसको एसक्यूएल मैप को यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं टू ट्राई टू फाइंड द एसक्यूएल इंजेक्शन डायरेक्टली। कोई भी वेबसाइट का, अगर आप पॉपुलर वेबसाइट का देखेंगे, उस पर एसक्यूएल एरर नहीं मिलेगा। अगर एसक्यूएल एरर्स मिल रहा है लाइक इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर कुछ भी, तो आप डायरेक्टली आप जाके उस पर एसक्यूएल मैप रन कर लीजिए। तो ये हमेशा आपको ये याद रखना है। तो ये आपको सारे आपको गूगल डॉक्स मैनुअली, अगर स्मॉल स्कोप है तो आपको यूज करना ही है, सारे पे आपको ये मैनुअली आपको चेक करना ही होगा इन द गूगल डॉकिंग फेज। In the second step, there is another tool to find some buckets. This is a tool Grey Hat Warfare. Like यहाँ पे हमें क्लिक टाइम यूज करता हूँ और सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन भी सर्च कर सकता हूँ, मतलब PHP, एक्सेल, डॉक, PDF कोई भी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिल रहा है मुझे, पब्लिकली एक्सपोज डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, और कुछ में कुछ सेंसिटिव है या कुछ बकेट्स भी मिल गया, तो उस पर मैं रीड एक्सेस, देन उस पर राइट एक्सेस इनेबल्ड है भी या नहीं, वो डॉक्यूमेंट में कुछ में ऑब्जेक्ट अगर पुट करूंगा या डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर वो उसका रिलेटेड है क्लिक टाइम का, देन आई कैन डायरेक्टली रिपोर्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस साइड, ग्रे हैट वारफेयर। Another step is for the OSINT, open source intelligence. This is phonebook.cz. You can directly use this site for your OSINT process in the recon page. Like I am searching clicktime.com and I am searching for URLs. ये देखिए कुछ सेंसिटिव अगर एंड पॉइंट्स है यहाँ पे, अगर कुछ अगर ये तो मेरा फ्री है, फ्री में ये कुछ भी मुझे ब्लॉक कर ही देगा। और एक पेड वाला है तो मुझे ये सेंसिटिव एंड पॉइंट कुछ अगर PI डाटा भी है तो मुझे ये दे देगा। तो मैं डायरेक्टली उसको रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। अगर इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री है, अगर यहाँ पे डाटा अगर लीक्स हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, जब कोई भी हमें ऐसा अगर रिपोर्ट बनाता है तो आप अपना जो वेबसाइट है क्लिक फोनबग सीजेड से या इंटेलेक्ट से आप डायरेक्टली रिमूव भी करवा सकते हैं। अगर कंपनी फिनटेक है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। लाइक क्रिप्टो करेंसी का अगर डाटा अगर मिल गया, लाइक अभी वाजरिक्स का डाटा रिलीज हुआ था, तो आप एक OSINT के फेज में ये वाला आप एक प्रोसेस कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये इंटेलेक्स को वो API यूज करता है बैकएंड में, phonebook.cz. In the meantime, you can do all the DNS record enumeration using the MX toolbox. Like आपको अगर मैं ये क्लिक टाइम का देखता हूँ और मुझे MX लुकअप करना है या SPF डिमार्क रिकॉर्ड चेक करना है, this is a P4 issue, SPF and DMARC, but you can use this process in your pen testing, or even your if that scope, if that organization has DMARC and SPF in scope, like email spoofing is in scope, then you can include in your automation phase also. मैनुअली यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, बट ऑटोमेशन पे आप मैंने एक टूल पे मेरे गिटहब रेपो में पब्लिश किया था, वो सोडन API यूज करता है टू फाइंड ऑल द DNS रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग SPF, DMARC, AA, AAA, MX, ऑल रिकॉर्ड्स। वो आप अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में डाल दीजिए और वो फाइंड करता रहेगा, बट यू हैव टू यूज द सोडन API की। लेकिन यहाँ पे आप अगर हुइस लुकअप करना है, वहाँ पे आपको ये मैनुअली करना है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। कोई भी अगर डोमेन अगर एक्सपायरी होने वाला है या हो चुका है, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ये हमेशा अगर कुछ कुछ टारगेट्स होते हैं वो अपना रिसेंटली मतलब वो अपकमिंग्स आ रहा है, वो अगर रिन्यू करते भी नहीं है, आप डायरेक्टली जाके उसको खरीद लीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये भी क्लेम किए हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप चेक करते हैं तो आप अपने ट्रैक इस पे रख सकते हैं, और बग बाउंटी प्रोग्राम भी है तो। And for last scope, we have to search like this, like Google acquisitions, Wikipedia. These all companies are acquired by Google. इस कंपनीज में, इस कंपनीज का वेबसाइट्स अगर हो मतलब है, इसमें भी आपको सब डोमेन्स देखना है। वो आपका एक स्कोप आपको बढ़ गया, देन अगर इस पे आप डायरेक्ट जाके रिपोर्ट करेंगे गूगल को,
तो आपको बाउंड्रीज मिनिमम $100 गूगल दे ही देता है, हॉल ऑफ फेम दे ही देता है। तो आपको ये आपको एक लार्ज स्कोप में आपका बढ़ गया। अगर आप गूगल पे हंट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हंट करना चाहते हैं, एप्पल में भी करना चाहते हैं, तो ये आपका एक स्कोप, एक वाइड स्कोप आपको बढ़ा देगा पूरा एक्विजिशन से, जब जब लोग आप हंटिंग करते हैं। ये वेबएक आर्काइव के लिए एक यूआरएल है। इस पे आप डायरेक्टली जाके, मैंने ojiva.in का दिया, यहाँ पे जाके अगर अगर सारे यूआरएल्स यहाँ पे लिस्टेड हो जाता है। और यू हैव टू सर्च फॉर लाइक एपीआई कीज। ये एक api.js मिला, एपीआई डॉट, इसमें सब डोमेन्स भी आपको मिल जाएगा, api.dev.ojiva.in, या पासवर्ड से। तो मैनुअली यू कैन चेक दिस ऑल्सो, लाइक सीक्रेट्स नहीं है। सो सिमिलरली यू हैव टू डू these things like this. Another step is called for the broken link checker. BLC is a command line tool. You can use that tool in your automation phase. But if you want to check in the manual phase, a dead link checker you can use. So this will scan the whole website and it will give you the output. और इसमें 404 अगर मिल रहा है कोई भी सोशल आइकन्स पे, उसको आप मैनुअली चेक कीजिए सोशल हैंडल से। अगर वो उसमें अगर यूजर नेम क्लेम नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली जाके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, डायरेक्टली उसको यूआरएल को टेक ओवर कर लीजिए। और हमेशा याद रखिए कि कंपनी लोग ईमेल्स पे भी आपको भेजते हैं, वहाँ पे भी सोशल हैंडल्स रहता है। डोंट फॉरगेट टू चेक दैट सोशल हैंडल्स एज वेल। आई हैव रीड सम रिपोर्ट्स, people are finding in the email social handles. You have to check these also. और आपको सब डोमेन एनुमरेशन करना है एक स्मॉल स्कोप में, लाइक एक मीडियम स्कोप में इमीडिएटली करना है, तो सबफाइंडर डॉट सी इन 99.nl यू कैन यूज। Like this will find the IP address, if this is behind in Cloudflare or not. This will find out, like मैं अगर दिया backrowd.com, this will find this target is behind like Cloudflare. This is Cloudflare's IP. The orange proxy on means this target is behind Cloudflare. If you'll run nmap this for this target, you won't get any details because this is behind Cloudflare. Cloudflare is protecting these domains. Orange, this is means orange proxy is on. But try to find the origin IP by using the Sodan CLI and using uncover. I'm sharing my command. Yes, this script is running. In the meantime, I'm sharing something. Now fog is running. I will share a command. This is the command to find Sodan. I'm using Sodan CLI. Like this will use the search command certificate subject CN. Like मैं target देता हूँ clicktime.com और मैंने Sodan ये with using HTTPX. I'm using this. This will find all the IPs if this is belongs to that target. जब भी कोई लोग अगर वो क्रिटिकल इशू रिपोर्ट करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं ट्राई टू फाइंड द हिडन एसेट्स। तो आपको इंटरनेट सर्च इंजन से ये हिडन एसेट्स आपको मिल ही जाएगा। लोग ज़्यादा यूज करते हैं सोडान, सेंसिस। पीपल आर यूजिंग दीज टूल्स मोर। यू हैव टू चेक ऑल दिस आईपीस मैनुअली। ऑल्सो अगर ये आपको सारे आईपीस मिल गया, इसके अगेंस्ट पे आपको फॉफ रन कर देना है, एंड विथ न्यूक्लियाई विथ योर डिफॉल्ट टेम्पलेट्स एंड प्राइवेट टेम्पलेट्स।
तो आपको और एक ज्यादा hidden जो से इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा जब जब आप ऐसे वो डिस्कवरी करते हैं जो एक एसेट को, एक टारगेट को। Here I am using uncover. The key is only Sodan and Census I am using. Uncover क्या करेगा, ये डिफरेंट सर्च इंजन से अगर आप एक ई हाइपन देते हैं एक्सटेंशंस, यहाँ पे आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, सोडान सेंसिस फोफा जो भी कुछ है। मैं यहाँ पे सोडान सेंसिस दिया, ये दोनों एपीएस की मेरे अभी पेज में इंस्टॉल्ड है। मैं क्या किया, ojiva.in पे अनकवर रन कर दिया, ये विदिन ए सेकेंड इट विल फाइंड आउट इसमें कुछ भी नहीं है। सॉरी मैंने और एक टारगेट ये सोडन एंड सेंसिस ने दो आईपी एड्रेस फाइंड आउट किया। तो वहाँ पे आपको चेक करना है मैनुअल एंड यू हैव टू रन फफ एंड न्यूक्लाई अगेंस्ट these टारगेट्स। Another command setting सब फाइंडर। सब फाइंडर को आपको जब भी रन करना है ऑलवेज यूज द हाइपन ऑल टैग। दिस विल टेक सम टाइम बट इट विल डेफिनेटली गिव यू एडिशनल आउटपुट्स। अगर आप लोग सब फाइंडर नॉर्मल मोड में रन करते हैं एंड विथ हाइपन ऑल रन करते हैं तो दिस विल गिव यू एडिशनल सब डोमेन्स, बट दिस विल टेक सम टाइम, but it will like it gave me in the 30 seconds 80 subdomains. If I'm running ojiva.in without tags, let me see how it gives me. You have to filter if you're getting these types of subdomains like prod, dev. You have to filter in the sorting in the filter subdomain phase, and you can manually test. You have to run nuclei. You have to run the fuzzing with your good word list also. It gives the same result. But if you run against a huge targets like Facebook, Sony, Apple, it will definitely give you more results with the all tags. So don't forget to add the hyphen all, and you have to configure all your APIs keys in the subfinder config folder. Before that, you have to do. For now, this script is running for the small scope. Again, I am showing for a large scope, sorry, for a medium scope. This is a script for medium scope. In the first step, I am using SumFinder with all tag. This will give me all outputs. Again, I am using AMAS for the passive enumeration. You can use SubFinder, AMAS, Asset Finder, Sublister. I will say use as much as tool for passive subdomain enumeration. Then sort and filter for the duplication. Again, use HTTPX to find out the active subdomains, and also use the to get the status code length. You will get an idea to hunt on this if this feature has a this subdomain has a large feature. Again, I'm using webback URL against all the subdomains, but here you can use webback URL. Waymore is a good tool. I have used this Waymore. You can use this. Use Gau Plus. You can use all the tools. Then you just grab for the .js, grab for the sensitive extensions. After you get the .js, run link finder and secret finder for the .js files. Also from the JS files, you can find out misconfigured buckets also. Here you have to use similar, some tools are there. Also, you can create your customized tool using ChatGPT also, but you have to only implement your mindset, how you can find out, how you have to automate. Again, I'm using Dart search against all the subdomains. So you have to fuzz all the subdomains.
Again, I'm using nmap for the port scanning. This will give me output in the nmap.txt report. Again, gf scan for the possible like accesses SQLi. If I got the SQLi here parameters, I will use SQL map. Or if I got the accesses parameters, I will put the Delphox or access striker in the automation page. Again, I'm graphing the JS files. If you can automate your GitHub Recon also using GitHub. And using subj, you can take over. You can use takeover, subdomain takeover. And again, nuclei, you have to use multiple templates. Your own private templates you have to use. There is a tool which will find out all the public private templates is listed in GitHub. I will share that to that link to Yes. He will provide you. In the eyewitness also you can take you आप लोगों को एक मिल जाएगा एक subdomain का screenshot मिल जाएगा. This is done. This is just basic script because if I will run, this will run for 2, 3, 4 days. Even some for last targets, it will run for 15 or 30 days in your VPS server. So according to your targets, you have to find out you have to create your script, then you have to customize your VPS, then you have to run. I do my all the recon automation in fully automation mode. I just put all my scripts in the VPS and I go for my office and go for my I go to sleep. And that's it. Like this is called like you can say hack while sleeping. This is running. This will take some time. I'm canceling this. That's it, guys. If you have any questions, you can ask me now.